Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is an introductory lecture uh, about literary theory, and in this lecture we will try to find out what is the meaning of literary theory and how is literary theory different from literary criticism. So the difference between these two, criticism and theory, that will be discussed. And as I said, this is just an introductory lecture. Later on, different theories will be discussed and their applications. But for the time being, the difference between these two and the meaning of these two. We will also try to find out what are the important items which should be there in an adequate literary theory. For the start, in the beginning, we can say that literary theory is the body of rules or principles. The theory is the combination of principles. It is the combination of rules. These combination of rules or principles, they are used in order to evaluate or appraise a work of literature or works of literature. So the definition is, as I said, that theory means a body of rules. There are some rules and it makes a body, and the combination of these rules or principles, that is a theory. These theories, what do they do and why are they important? They are important in order to evaluate some work of literature. That may be a poem, that may be a novel or a drama. So when we say that this is the evaluation of literature, we refer to literary criticism. The practice of evaluating literature, the practice of judging and appraising literature is literary criticism. But the way in which you do this criticism, the way of the interpretation of a work of art, that way is referred to as literary theory. Um, there is an analogy which can be used for it. For example, if you have an electric board and you want to have a look at it to see what it is like, but it is of course shut and closed, you need to open it. Then how would you open it? You will take a screwdriver, and then with the help of the screwdriver you will open it. This is exactly like theory and criticism. This uh, board, electric board, is the example of a poem or a novel or a drama, and this looking at it is its appraisal, that is its judgment, its evaluation. But you cannot open it unless you have the screwdriver, the tool. That tool is actually the theory or the body of rules or the body of principles. So the screwdriver, which is a tool, is used to open the electric board. Just like this, we take the analogy that the electric board is the example of a poem. You want to appraise it, to have a look at it. This appraisal is actually criticism, but you do it with the help of a screwdriver. That is, you apply a body of rules or a body of principles or a theory to it, and as a result, you open it. So, this is one analogy which we can use for literary criticism and for literary theory, taking literary theory as a tool in order to explain or in order to evaluate or appraise or judge a piece of literature, a poem, novel, or drama. So it is the practice of evaluating literature, criticism, and the way in which this criticism is done by applying the tool, the principles, is referred to as theory. Uh,
There is another analogy with the help of which theory can be explained. And some of the critics say that literary theory is just like the eyeglasses. You have, for example, many eyeglasses. One eyeglass is that of feminism, that is feministic theory. The other eyeglass is that of Freud's theory. Yet another is that of Lacan's theory, or structuralism, or formalism, etc. These are different eyeglasses. And this is the text, that is the poem, the drama, or the novel which you want to study. Now, if you are studying this text, novel, poem, drama, etc., by wearing one type of eyeglass, that is the eyeglass, let's say, of feminism, you are studying this under the eyeglass of feminism, then you would see only feministic ideas in this text because you are wearing the glass of the literary theory named feminism. So it is compared, literary theory is compared with the lenses of the eyeglasses, that when you wear one type of eyeglass, you see only that thing in the text. If you wear another, you see that thing in the text. So if you are wearing the eyeglasses of feminism, you'll only find out feminism in this story or in this novel or in a poem or whatever the literary genre is. So this is that other analogy which is used for it. ये ज़रा उर्दू में सुन लें, ये चूँकि पहला लेक्चर है तो इसको समझने की कोशिश करें. ये लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है और इसमें हम लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फ़र्क भी मालूम करेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि लिटरेरी थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्या है. लिटरेरी थ्योरी की क्रिटिसिज्म तो ये शुरू ही में दे दी गई है कि ये रूल्स का मजमुआ है, प्रिंसिपल्स का मजमुआ है और इन रूल्स के मजमुए और प्रिंसिपल्स के मजमुए के ज़रिए हम किसी लिटरेरी वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रेस करते हैं. अप्रेस का मतलब है वैल्यू मालूम करना, एवेल्यूएट करना, जज करना. तो ये जो बॉडी ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, ये थ्योरी कहलाता है. लेकिन ये एक एनालॉजी अगर यूज़ की जाए, एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी. मसलन आपके सामने एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जिसमें मुख्तलिफ स्विच लगी हुई हैं और आप इसको देखना चाहते हैं. तो आपका ये जो इसको देखना होगा, ये तो क्रिटिसिज्म के बराबर होगा, लेकिन इसको देखने के लिए आपने कोई टूल इस्तेमाल करना होगा जो पेचकस है. आप पेचकस के साथ इसको खोलेंगे. तो इस स्क्रू ड्राइवर की मिसाल लिटरेरी थ्योरी की है और जब आप इसको खोल के एवेल्यूएट करते हैं तो इसकी मिसाल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की है. एक और एनालॉजी भी इस्तेमाल किया जाता है और वो एनालॉजी ये है कि लिटरेरी थ्योरी की एग्जांपल जो है वो चश्मे की है. मसलन आपके पास बहुत सारे चश्मे हैं. एक चश्मा है एक थ्योरी का, मसलन फेमिनिज्म का. दूसरा चश्मा है दूसरी थ्योरी का, मसलन फ्राइड की थ्योरी का या लकान की थ्योरी का, स्ट्रक्चरलिज्म का, फॉर्मलिज्म का. ये मुख्तलिफ आपके पास चश्मे हैं. ये आपके पास टेक्स्ट है. टेक्स्ट से मुराद कोई नज़म, कोई नावल, कोई स्टोरी. तो आप जब ये एक चश्मा पहनेंगे इसको स्टडी करने के लिए, तो इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें नज़र आएंगी जिसके लिए ये चश्मा बना हुआ है. मसलन अगर फेमिनिज्म के लिए बना हुआ है तो आपको सिर्फ फेमिनिज्म वाली चीज़ें इस टेक्स्ट में नज़र आएगी. अगर इसी टेक्स्ट को आप दूसरे चश्मे से देखेंगे, मसलन फ्राइड के चश्मे से देखेंगे, तो आपको सिर्फ फ्राइड के जो ख्यालात हैं वो इसमें नज़र आएंगे. तो राइटर कंपेयर करते हैं इस लिटरेरी थ्योरी को चश्मे के साथ. तो जो लिटरेरी थ्योरी है ये तो रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं और इसकी कम्बिनेशन है. और इसकी इन कम्बिनेशन की वजह से, रूल्स की थ्योरी की वजह से के ज़रिए हम किसी
لٹری ورک کو، پوئم کو، ڈرامے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ جو اپریزل ہے، پریکٹس آف ایویلویشن ہے، یہ کرٹیسزم ہے. اور یہ جو باڈی آف رولز ہے، جو ٹول ہم استعمال کیا ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اس کو جج کرنے کے لیے، تو یہ جو ٹول استعمال ہوا ہے یہ لٹری تھیوری ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. آپ مختلف ڈیفینیشن ہے. تھیوری کو وے آف انٹرپریٹنگ اے ورک آف آرٹ بھی کہتے ہیں. جس طریقے سے آرٹ کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے کو بھی تھیوری کہتے ہیں. اور جب تک ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ کو ایگزیکٹ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن فی الحال یہ اتنا ہی سمجھنا کافی ہے. جب ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، یہ جو پریکٹس آف ایویلویشن ہے یہ بذات خود کرٹیسزم ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں جس ٹول کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے لٹری تھیوری. تو بعض لوگ اس کو آئی گلاسز سے کمپیئر کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو کیمرہ کے لینس سے کمپیئر کرتے ہیں، جس میں سے آپ دیکھ کر کسی ورک کی ایویلویشن کرتے ہیں. تو لہٰذا لٹری کرٹیسزم جو ہے یہ ایک ریسرچ میتھڈ ہے. اور اس لٹری کرٹیسزم کے کرنے کے لیے آپ کو کوئی لٹری تھیوری ایز اے ٹول چاہیے ہوگا جس کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض چشمے دور اور نزدیک دونوں کے ہوتے ہیں، بائی فوکل لینزز اس میں لگے ہوتے ہیں. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تھیوری آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹیو کوئی دوسری تھیوری آ سکتی ہے. مثلا آپ ڈسکس کر رہے ہیں فیمنزم کو، اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھیوری مارکسزم بھی ہے، تو اس کا ذکر بھی آ سکتا ہے. کبھی کبھار ہم دو تھیوریز بیک وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اس ٹیکسٹ کو، نظم کو یا ڈرامے کو ایکسپلین کرتا ہے اور ہمیں اس کی وضاحت دیتا ہے مختلف حوالے سے. اب یہ تو دس مچ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ literary theory is a body of rules, a body of principles, and these bodies of principles, they are important for evaluating a piece of work. Now, the critics are of the opinion that there are two main types. There are many theories, but they say that there are two main types of theories. One type of theories are referred to as intrinsic theories, and the other type of theories are referred to as extrinsic theories. As far as the intrinsic theories are concerned, for such a theory, which is called intrinsic theory, only the text is important. Only the text is taken into consideration, and whatever is outside the text is not taken into consideration. In this case, in the case of intrinsic theory, there are many intrinsic theories which we'll discuss later. But in the case of intrinsic theory, you isolate a work of literature from its external reality. So something which is external are not taken into consideration when you are using an intrinsic theory. There is no relationship taken of that text with the external world, and this theory would consider that the poem, the drama is its own world, and that we don't need to know about the poet, about the writer, about the playwright, about his life, about the background, about the history in which it took place. That is not important as far as the intrinsic theories are concerned. In the extrinsic theory, the important thing is the context. That is, you study the text with the help of the context. The context is what, for example, if you are studying a poem, then you will try to find out who was the poet, what was his life like, and when he wrote the poem, what was the situation, what was he doing then. So the context or something which is outside the poem
becomes important for the explanation of that text, for the explanation of that literary thing which we want to explain. So the outside world becomes important in the case of extrinsic theory. ये ज़रा समझ लें अब उर्दू में भी। एक तो आपको समझ आ गई कि थ्योरी से मुराद है बॉडी ऑफ रूल्स, जिसकी मदद से आप किसी लिटरेरी वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरीज तो बहुत सारे हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे बाय नंबर, लेकिन क्रिटिक्स बताते हैं हमें कि दो बड़ी किस्में हैं इन सारी थ्योरीज को। एक किस्म की थ्योरीज को हम इंट्रिंसिक थ्योरीज कह सकते हैं, दूसरी को एक्सट्रिंसिक थ्योरीज कह सकते हैं। जो इंट्रिंसिक थ्योरी, इंट्रिंसिक का मतलब ही अंदरूनी है, जो इंट्रिंसिक थ्योरीज हैं वो सारे थ्योरीज सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ते हैं। मसलन कोई ड्रामा दिया गया है, कोई पोएम है, कोई नॉवेल है, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन उसी ड्रामे से और टेक्स्ट से निकालेंगे और टेक्स्ट के बाहर की बात नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि ये नज़म या नॉवेल कब लिखा गया, उस वक्त सियासी हालात क्या थी, उस वक्त मॉरल हालात क्या थी, और उस वक्त रिलीजियस हालात क्या थी, और कौन सा एज था। ये बाहर की चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ टेक्स्ट पे तवज्जो दिया जाएगा, सिर्फ वर्ड्स पे तवज्जो दी जाएगी कि इनमें क्या है, और ये इंट्रिंसिक थ्योरी कहलाएगी। जहाँ तक एक्सट्रिंसिक थ्योरी का ताल्लुक है, तो एक्सट्रिंसिक थ्योरी कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा जोर देता है कि ये नज़म, ये नॉवेल, ये स्टोरी ये कब लिखी गई, उस वक्त सियासी हालात क्या थे, मजहबी हालात क्या थे, राइटर के हालात क्या थे, राइटर की सिचुएशन क्या थी, और ये एक्सप्लेन करेंगे इन बाहर की चीज़ों की मदद से इस थ्योरी को। तो दो किस्म की हमारे पास थ्योरीज हो जाएंगी मजमूई तौर पर, इंट्रिंसिक थ्योरीज एंड extrinsic theories. So this was about these two types of main theories. Now we come to the idea that what is inside an adequate theory. If a theory is an adequate theory, a complete theory, a good theory, what will it have? We have already discussed these points, that a literary theory is a combination of concepts, ideas, or assumptions, and with the help of these assumptions and ideas, some literary work is interpreted, some literary text is explained, and that the theory in literature uh, is beyond the typical plot, theme, and character setting studies. Now, previous times, we would study only the plot, the theme, the characterization, the setting. That is not included in the theory. That is, when we discuss it, that may be included in the extrinsic theory, but we are doing the fact that in the beginning we only talked about the plot, theme, character, but now not only about these but a little more. So literary theory in literature talks about not only these things but it talks about a little more. And what is that little more? That is what we'll discuss later. These principles are derived from the internal analysis of the text sometimes, and sometimes from the external logic, as we discussed in the intrinsic and the extrinsic theory. But what would be an adequate theory, and what would the adequate theory have? The four elements which an adequate theory must have are these. Number one, it will have to discuss the work itself, that is the text. And of course, if the text is not present, the theory cannot discuss anything. So this is the first important thing. Something which has been written by the writer is the text, and in an adequate theory, the text is important. The second important thing which is discussed in the theory is the person, is the artist, the writer, the poet, the dramatist, the novelist who has created the work. So the writer is important, the text is important, the writer is important. Both of these are discussed in an adequate theory. The next is the setting.
That is, the universe or the nature that is being imitated by the work. The work would imitate something. When it imitates, let's say for example, some specific area, some specific customs, then in that case, this theory must discuss this also. And finally, the audience of the work, that is the reader. Adequate theory would have all these four items in it. So some theories, we say based on these four items, that some theories are author-based theories. Taking the second point, some theories are author-based theories because they talk about the authors only. Some theories, taking the last point, is the reader-based theories. What are the readers like? What meaning do the readers take? The meaning may not be present in the work, but the reader takes some meaning from it. The theory would discuss it, and this is referred to as reader-based theory. There is also the text-based theory, which only discusses the text of the writer, and that theory is referred to as the text-based theory. And there is the other theory which take into account the universe, the setting. So these are the theories that propose the text as imitative of the universe, that the text imitates the universe. ये चार किस्म की चीज़ें एक मुकम्मल थ्योरी में डिस्कस होती हैं. नंबर वन, इसमें वो टेक्स्ट डिस्कस होगा जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, वो या नज़म होगा या नॉवेल होगा, शॉर्ट स्टोरी होगी या वो ड्रामा होगा, और इसके टेक्स्ट को सिर्फ डिस्कस करेगा. यह थ्योरी जो है इसके राइटर को सिर्फ डिस्कस करेगा, और यह थ्योरी इसकी सेटिंग को डिस्कस करेगा कि ये किन हालात में ये राइटिंग लिखी गई है, और या फिर ये ऑडियंस या रीडर को डिस्कस करेगा. तो इस बुनियाद पर चूँकि ये चार चीज़ें होनी चाहिए, इसमें हमारे पास चार किस्म की थ्योरीज है, जिसमें हम राइटर को लेते हैं और उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इसको ऑथर बेस्ड थ्योरी कहेंगे. जिसके बारे में हम रीडर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे वो रीडर बेस्ड थ्योरी होगी, और जिसके बारे में हम टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे वो टेक्स्ट बेस्ड थ्योरी होगी, और इसी तरीके से सेटिंग बेस्ड थ्योरी होगी. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरी हो सकती हैं, और ये जो थ्योरी है ये रिजॉल्व करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइसिस को जो कि किसी लिटरेरी टेक्स्ट में पैदा होती हैं. तो इन प्रिंसिपल्स के थ्रू वो मसला हल हो जाता है. मसलन अगर किसी कैरेक्टर में कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो हम उस पे साइको एनालिटिक थ्योरी अप्लाई करते हैं और मालूम करते हैं कि इसके साथ क्या मसला था. मसलन आप कोई ड्रामा लेते हैं, शेक्सपियर का ड्रामा ले लें, मसलन आप उसका हैमलेट पढ़ते हैं. अब हैमलेट जो है वो पागल है कि पागल था कि पागल नहीं था. अब ये साइको एनालिसिस आप करते हैं. इसका जिक्र आपको वर्क में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जिक्र आपको उस थ्योरी की मदद से हमें पता चलेगा कि ये साइकोलॉजिकली इसकी क्या हालत थी. तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ. इस लेक्चर में हमने जो बातें सीखी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. हमने लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा कि ये बॉडी ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स होता है, और इसके ज़रिए जिस चीज़ की हम एवेल्यूएशन करते हैं वो अप्रेजल इन इट सेल्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है. हमने इसको एनालॉजी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया, और हमने ये भी कहा कि प्रैक्टिस ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ लिटरेचर ये क्रिटिसिज्म है, और द वे ऑफ इंटरप्रेटिंग ए वर्क ऑफ आर्ट ये वो थ्योरी है. थ्योरी की एग्जांपल हमने आई ग्लासेस के ज़रिए भी दी, और ये आई ग्लासेस मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ़ थ्योरीज हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल दी. और कभी कभार हम दो थ्योरीज एट ए टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इतने ज़रूरी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ डेफिनीशंस हैं, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. जो इम्पोर्टेंट बात है वो इंट्रिंसिक थ्योरीज और एक्सट्रिंसिक की हैं, कि जो सारी थ्योरीज मिला के आप पढ़ेंगे तो ये दो किस्मों में आप इनको डालेंगे. इंट्रिंसिक थ्योरी में आप टेक्स्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और एक्सट्रिंसिक थ्योरी में टेक्स्ट के अलावा जो राइटर है उसकी हालात ज़िंदगी है, बैकग्राउंड है, सेटिंग है, उसको आप डिस्कस करेंगे. और ये कि किसी भी एडिक्वेट मुकम्मल थ्योरी में
یہ 4 چیزیں ہوں گی. ٹیکسٹ کا ذکر ہوگا، رائٹر کا ہوگا، سیٹنگ کا ہوگا، ریڈر کا ہوگا. اگر ٹیکسٹ کا ذکر ہے تو یہ ٹیکسٹ بیسڈ تھیوری ہوگی، رائٹر کا ہے تو رائٹر بیسڈ ہوگی، سیٹنگ کا ہے تو سیٹنگ بیسڈ ہوگی، اور ریڈر کا ہے تو ریڈر بیسڈ ہوگی. اور جو پرابلمس رائٹر نہیں حل کر سکا ہے اس کو ہم ان تھیوریز کی مدد سے حل کریں گے. So that's all for now. Thank you and good luck.